गुरुदेव, देवी सती के विभिन्न अंग जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गई। क्या शरीर के हर अलग अलग अंग में शक्ति होती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? नहीं, शक्ति तो पूरा सब कुछ में शक्ति है। इसका मतलब यही है कि देवी सब जगह समग्र रूप से देवी को जानो। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते। देवी को कहते तो सब रूपों में, सब शक्ति में तुम ही हो, तुम्हारा हर रूप में। इसलिए देखो, जब दुर्गा का आराधना होती है, कंजिका बिठाते हैं, गाय को पूजा करते हैं, हाथी को, और आयुधों का पूजा होता है, अग्नि की होती है, जल की होती है, इस तरह से। और जो भी आहुति देते हैं उसको भी पूजा करते हैं। इस तरह से हर चीज़ में देवी निवास कर रही है। ये बताने, देवी सर्वव्यापिनी है, विश्वव्यापिनी है, ये तत्व बतलाने के लिए। और एक एक अंग एक एक जगह गिरा है। इसका माने जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हुआ, ऐसे 52 शक्तिपीठ का अपना वो है। तो इतने जगह शक्ति की अलग अलग। और उपासना में ये भी है, एक ही अंग को लेके पूजा कर। भागवत ने भी यही कहा, जब सिर्फ चरण लेके चरण की पूजा करो, फिर और थोड़ा ऊपर जाओ। इस तरह से पूरा अंग की पूजा जो है एक एक अंग से शुरू करते हैं। इससे भी जो है उपासकों को बड़ा आनंद आता है। इसलिए क्या है, कई उपासनाओं सिर्फ आंखों को देखते हैं, कई उपासना में सिर्फ हस्त। इस तरह से ये उपासना का तरीका है। गुरुदेव, रावणा को भी लंकेश्वर कहा गया है। रावण को ईश्वर की उपाधि उनके गुणों से मिली या किसी और वजह से? वो भक्त था, इतना निष्ठावान था, इसलिए मिला होगा। गुरुदेव, मेरे ज्योतिषी ने कहा है मोक्ष के लिए मेरे पास 2 जन्म बाकी हैं। क्या आप इस जन्म में ही मेरा आखिरी जन्म बना सकते हैं? देखो, ये सब बातों में मत आओ। मोक्ष एक चीज़ है, उसके लिए कोई समय सापेक्ष नहीं है। हर जन्म में हो सकता है, अब भी हो सकता है। जहाँ सारी इच्छाओं को तुम छोड़ोगे तो मोक्ष है। ये चाहिए, वो चाहिए, दूसरा चाहिए, वह मोक्ष भी चाहिए, ये इच्छा को भी त्याग करे तब आखिरी में। बाकी सब इच्छा छोड़ के मोक्ष की इच्छा बहुत जल्दी छोड़ देंगे। मोक्ष की इच्छा छोड़ो माने अरे चलो मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं। बाकी सब इच्छा के बाद आखिरी में मोक्ष की भी चाह छोड़ते हैं। तो अभी है, यही है, उसका कोई समय सापेक्षता है नहीं। हो गया। गुरुदेव, तड़प से सिक्योरिटी गार्ड, सेक्रेटरी और आप भी मिल जाते हैं, पर जितना भी तड़प हो, सुबह का सूरज नहीं दिखने को मिलता। लोग मुझे आलसी भी कहते हैं, कोई उपाय है? भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, तुम्हारा मन क्या कहता है? तुम थके हो, आलसीपन आ रहा है, तो अपने भोजन पर थोड़ा ध्यान दो। कैसा भोजन करता होगा तो ये देखो। और व्यायाम कर रहे हो क्या, ये देखो। शरीर में अच्छे सर्कुलेशन हो रहा है क्या, ये देखो। ये सब तो तुम कर सकते हो। या देखो, यदि D3 कम है शरीर में, विटामिन B12 D3 की कमी हो, तब भी थकान होती है, आलसीपन आ जाता है। और आपका शुगर लेवल ठीक है क्या, ये सब चेक करो। तुम्हें लगना चाहिए मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ताकि बहुत आलसीपन हो रहा है, सुबह उठते ही थकान हो रही है, तो अवश्य उसका चेक करो। ठीक है।
ये एक दूसरी बात है, अच्छे से थोड़ा वॉकिंग करो, दौड़ लगाओ, आप भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो। ये सब करने से ऊर्जा जागती है, तो कहाँ आलसीपन पकड़ेगी तुम्हें। हाँ, एक आखिरी प्रश्न गुरुदेव। गुरुदेव, शादी के लिए जब मेरे माता पिता किसी को लेकर आते हैं तो हमें लड़का तो पसंद आता है, पर उनके साथ के लोग भयभीत करते हैं। शंकर जी भी शादी करने चले तो बारात देखकर पार्वती जी ने कैसे अपने आप को संभाला होगा? मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए। देखो, मसाला उसका मिसाल तो मिल ही गया तुम्हें, एक मिसाल तो है ही, एक निदर्शन तो है ही। तो शंकर जी के साथ ऐसा है, फिर पार्वती पीछे नहीं हटी, पार्वती तो आगे बढ़ी। तुमको लड़का पसंद है, लड़के से तो शादी कर रहे हो, सासू जी से या ससुर जी से तो नहीं। इसलिए तुम बाकी उनके परिवार को इतना ज़्यादा वो मत दो, ठीक है ना। पसंद आए तो करो, और फिर भी कुछ है तो वहाँ जाके बदलने के लिए तुम्हें बहुत मौका है। हाँ, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वहाँ तो कर सकते हो, ठीक है। Gurudev, today India's first IoT-enabled medical oxygen containerized plant was inaugurated. This is a small video. वॉल्यूम क्या हो रहा भाई? They can come here, the scientist, and yeah, सुनो इधर बुला लेना। बनी नहीं मेल पर बुला। After the video के बाद। Every life is a blessing, and every breath is gratitude. This is the basic premise for this project, Medical Oxygen Grid for the country. At the outset, let us make it clear that this concept was not envisioned due to the COVID pandemic, though this phase saw a sudden spurt of demand for medical oxygen throughout our nation. India is a country which has a huge population as well as a diverse demography of 130 crore people spread across a vast stretch of landmass. In India, 70% of the population still stays in our villages. Many of the villages are still not well connected with mainstream towns and cities. This makes the last mile delivery and availability of medical oxygen in rural areas very difficult, and just adding medical oxygen capacities in district headquarters is not the solution. Having a robust and a resilient mechanism of captive source of oxygen generation, cylinder filling stations, and an efficacious distribution network will ensure last mile delivery and availability of medical oxygen. Creating of this national medical oxygen grid is an exercise of laying a strong foundation of rural healthcare infrastructure with the basic premise of arresting the migration of patients from villages to cities. This will ensure accountability, skilling, and empowering of our government hospitals by leveraging IoT technology. Here, all our systems come with IoT.
Secondly, the reason for having chosen fire brigade station as the location for this containerized plant serves the dual purpose. Here, technology like IoT can be leveraged to access cylinders. You can have an app. On the app, any senior citizens who cannot travel or who are unable to get out of the house can place order for cylinders on the mobile. And the fire brigade station people can go and deliver the cylinders at home. So it's a perfect integration of technology and accountability. The objective is to address these 7 challenges. First, availability. At the doorstep, please note, all the oxygen plants are far away in industrial zones, and the dealers are only in cities and not in talukas, and start their offices at 10 a.m. and close by 6 p.m. Second, accessibility. Making availability of oxygen cylinder banks in taluka and community health centers and leveraging IoT technology for inventory control, pre-COVID or post-COVID, as you are reading now. A lot of precious lives are being lost for want of oxygen. These reports go unnoticed and unreported. Third, affordability. We can make it affordable. Rather, we need to make it free also to the needy. As per our constitution, the first fundamental right enshrined in the constitution mentions of the right to life. So no barrier should stop making oxygen available, and that too free for the needy and the poor. Fourth, accountability. Arresting pilferage of oxygen in government hospitals. Deploying IoT, as suggested by our Honorable Prime Minister, in oxygen generation plants will ensure correct volume, purity, pressure, and duration of operation. Fifth, redressal in case of failure of oxygen plants. EMOS, Emergency Medical Oxygen System, is our patent product which serves as a standby to assist failure any source of medical oxygen, generators, liquid medical oxygen, tanks or cylinder banks in hospitals immediately, like that of a firefighter or an ambulance on call. Sixth, medical oxygen containerized plant technology. Principally, containerized plants are factories on wheels. This technology is aptly named as plug-and-play station. It finds application in diverse fields of engineering, from water treatment, power, construction sector to defense applications. The containerized plants mounted on trucks can go to any location, plug into the power source. Some come with captive source and efficaciously sense the purpose for which it is designed. We are the first Indian company to have indigenously designed and manufactured an India-centric robust medical oxygen containerized plant with cylinder filling station that will enable in creating a medical oxygen grid for our country. 7. Location. We would like to see that every district has one medical oxygen containerized plant located in the fire brigade station of the particular district or taluka. By doing this, we can ensure that we'll train the firemen to operate this as an oxygen station as well. We all understand when we know that the fire brigade personnel are idle for 350 days in a year. If we could train them to operate this containerized plant and fill cylinders, oxygen would be available 24/7, 365 days to all the people. Why have we chosen fire brigade stations? Essentially because of these two reasons: availability of man staff. Secondly, they are all located within the city limits. This becomes accessible to all people. The true growth of our nation will be measured by addressing this constitutional right of every citizen. Life is very fragile. You can live without food and water for a day or two, not without a breath for a few moments. I humbly request you to respect life
we all need to respect life. That's why we say every life is a blessing, every breath gratitude. सर्व जनिन सुखिन भवन्तु, सर्व संतो निरामया. जय हिंद.